This is module number 172 of our course of financial management. And in this module, we'll discuss the discounted cash flow methods, DCFs, which are actually used in capital budgeting. So this is a continuation of our discussion on capital budgeting. Before we actually see that what these discounted cash flow methods are, let's first see what is meant by discounting or present value. If you remember, in the very beginning, we talked about the time value of money, and we said that present value is the amount that we get by deducting interest from some future amount that is given to us. So discounting is a process of calculating the present value. यानी अगर हमें एक अमाउंट 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद मिलने वाली है, तो उसमें से अगर हम एक सर्टन रेट को सामने रखते हुए इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो उसकी आज की वैल्यू है. दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू. तो डिस्काउंटेड वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू, and discounting is the process of calculating the present value. So when we say discounted cash flow methods, it simply means those methods where we calculate the present values of the future cash flows, and from those present values we come up with certain decisions related to acceptance or rejection of a certain project. यानी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जाहिर है कि इसकी असल बुनियाद इसी चीज़ पर है कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि जितनी हम चाहते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट वी डिटरमिन बाय अप्लाइंग दीज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, where the objective is by using the present values we come up to certain conclusions. These discounted cash flow methods are commonly 4 in number: the payback period method, the IRR method, NPV method, and the profitability index or PI method. Let's have a look at them one by one quickly. The first one is the payback period method. इस मेथड के अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने अरसे में, कितने सालों में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में की जा रही है वो हमें वापस मिल जाएगी. सो मीनिंग दैट इफ वी आर पुटिंग इन 1 billion rupees, then in how many years we will recover those 1 billion rupees from that project. So this amount is calculated by considering the cash outflow and inflow. So project में अगर हमारी investment 1 billion है, तो कितनी inflows हमें उस 1 billion को recover करने के लिए चाहिए होंगी, and in how many years those inflows will be received. अगर 5 साल में वो amount recover हो जाती है, so we would say that the payback period is 5 years. फिर हम फाइनली इस payback period को, जो कि हमारे ख्याल में प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड होगा, उसको अपने रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड से कंपेयर करके ये फैसला करते हैं whether the project is acceptable or not. The second method, which is a little more tedious and also very commonly used, is the internal rate of return method called IRR method. Here what we try to do is to calculate the rate of return of the project. यानी वो प्रोजेक्ट हमें कितने परसेंट रिटर्न देगा, और वंस वी कैलकुलेट दैट रिटर्न वी कॉल इट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ. यानी हम चाहते थे कि प्रोजेक्ट हमें 7% रिटर्न दे, तो क्या प्रोजेक्ट हमें 7% रिटर्न दे रहा है? अगर दे रहा है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, और अगर नहीं तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे. हम आगे चल के जब इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया पर तफसील से बात करेंगे. बट द थर्ड वन इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. Present value, you know, is the value
of the future amount, the future cash flow today. So that is called the present value. So if we deduct the outflow of from the inflows, यानी हमारे पास एक तरफ इनिशियल आउटफ्लो है और दूसरी तरफ हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज हैं, अगर हम इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और उसको टोटल करके उसमें से हमारी इनिशियल आउटफ्लो जो हुई थी उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी. अगर हमारी इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है और आउटफ्लो कम था, so this net present value will be positive. It will be some absolute amount, 20,000, 200,000 or whatever it is. लेकिन अगर हमारी प्रोजेक्ट की इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हमारी आउटफ्लो से कम हो जाए, तो हमारे पास नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ सकती है. So we have this possibilities of having a positive or negative, and in very rare cases even a zero net present value. How do we make a decision on the basis of positive or negative net present value? This is something that we'll discuss, inshallah, in the modules that we will be discussing afterwards. So the last part of our discussion on discounted cash flow methods, the last method which is actually used very commonly in capital budgeting for the purpose of making decisions is profitability index method. Profitability index method in some ways is very similar to net present value. I would say similar because in net present value we take the difference of the inflow and outflow, and in profitability index we actually take the ratio of the inflow and outflow. दोनों में ही हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं, इनफ्लोज की और आउटफ्लोज की, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम उसका डिफरेंस उसको माइनस कर लेते हैं आपस में, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की जो हमारे पास अमाउंट आती है उसको आउटफ्लो के साथ डिवाइड करके एक रेशो और एक इंडेक्स की शक्ल में अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं. सो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं अपनी इस डिस्कशन को बाय सेइंग दैट discounted cash flow methods are those methods in which we use the present values of the future cash flows, and on the basis of those present values, by relating them, adding them, subtracting them, we come up with certain results which actually help us in deciding whether a certain project or a certain capital expenditure is acceptable to us or not.